130th नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात, नागपुर डिजाइन अवार्ड के साथ। नागपुर डिजाइन अवार्ड एक ऐसी कोशिश जहां पर नागपुर शहर के जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं और इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, जिन्होंने अपने काम से ना ही लोगों के जीवन को प्रभावित किया, लेकिन साथ ही साथ अपने काम को उस स्तर पर पहुंचाया जहां पर आज नागपुर के बाहर, देश के बाहर उनके काम की चर्चा है, उनके नाम की चर्चा है और साथ ही साथ उनसे जुड़े उनके शहर की चर्चा है। ऐसे डिजाइनर्स, ऐसे शिल्पकार जो अपने ऐसे आर्टिस्ट जो अपने काम में माहिर है, साथ ही साथ अच्छे वक्ता भी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कमिंग जनरेशन है, जो कमिंग लॉट है या जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आगे जाकर अच्छा काम करना चाहते हैं, वो इनसे इनका पीस ऑफ माइंड लें, इनके बेस्ट प्रैक्टिसेस लें और कोशिश करें कि वो अपने जीवन में और अपने प्रोफेशन में कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे वो भी बन पाए एक ऐसे डिजाइनर जिन्हें आगे जाकर नागपुर डिजाइन अवार्ड जैसे एक अवार्ड से सम्मानित किया जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ द किचन मिट गोदरेज इंटीरियर का। इट प्रेजेंट्स राज की बात नागपुर डिजाइन अवार्ड इन एसोसिएशन विथ a big thank you to Home Sense, Sabu's Home Sense. Can't forget to thank Dev Sir, Granite and Tiles. The show is powered by Mega Power Solar Energies Private Limited. Can't forget to thank IP Vastu Solutions by Architect Mala Dwivedi and a big thank you to Elementary. मेरे आज के जो मेहमान हैं, he is young, he is dynamic, he's done a lot of work and with all the respect he has got in the industry, past few years of his career, he has proved a point that when you have a vision and you make your vision as your mission, you grow and you make a name as architect Aditya Indurkar. Sir, namaskar. Sir, स्वागत आपका राज की बात में। First of all, congratulations and for accepting the award of Nagpur Design Award. Thank you so much. Did you like the trophy? Yeah, it's a great design trophy. I mean, architects would love to have such trophies. Sir, सबसे पहले बड़ा सीधा सवाल, why did you become an architect? I mean, it was a dream for my entire family. Since childhood, I used to draw sketches on any kind of piece of paper I got. Converted to, I gave elementary designs, intermediate designs. वो जो एक input था, impetus जो था. My whole family is an artist. My father was an artist. My grandparents were artists. वो artistry commercialize करने के लिए I had to struggle. Commercialize art बेचने के लिए struggle करनी पड़ती है. जी. And that struggle मुझे बहुत सारे उसमें हाथ मिले, गुरुज मिले, एंड उसके हिसाब से जो स्ट्रगल हुआ, जो मेहनत हुई, उसके साथ आई बिकम आर्किटेक्ट एंड इट वाज अ चाइल्डहुड ड्रीम बेसिकली. सो वेयर डिड यू स्टडी एंड हाउ वाज दोज डेज ऑफ लर्निंग? My entire study was done in Nagpur itself. I did my architecture from Priyadarsini Institute of Architecture and Design Studies from Nagpur. I became architect in 2009. Immediately started working with one of the great architects in Nagpur, established architects. Would you like to name him? Mr. Salankar and Mr. Kilyadar. Those were my gurus. Still are my gurus. Anurag sir, Pallavi ma'am, special mentions. उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे करियर में. I cannot thank them in my entire life. And उनके साथ में काफी काम किया. बहुत एक्सपीरियंस मिला उनका. प्रैक्टिकल अप्रोचेस क्या रहते हैं, कॉलेज का एक लाइफ जो रहता है उसमें हम बहुत सारी अलग चीजें सीखते हैं. जी. व्हेन यू एंटर योर प्रैक्टिकल लाइफ, उसमें बहुत अलग चीजें सीखते हैं उसमें. जी. देन उनके बाद में फिर इमीडिएटली फिर हमने हमारा खुद का फिर प्रैक्टिस चालू कर लिया दोस्तों ने. सर, लेकिन जब आपने पहला जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे तब का एक्सपीरियंस और जब खुद काम करना आपने शुरू किया होल सोली, सर वो डिफरेंस कैसा है? क्योंकि वहां पर तो देयर वाज अ गार्ड, देयर वाज सिक्योरिटी, देयर वाज सपोर्ट. यहाँ पे तो सब खुद करना है. देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन वर्किंग फॉर समबडी एंड वर्किंग फॉर योरसेल्फ. एब्सोल्युटली. 100 में से 10 चीज हम कर पाते हैं व्हेन यू आर वर्किंग फॉर समबडी. जी. और तो 100 में से 100 चीजें जब हमें करना पड़ता है ना, वो जो हम खुद करते हैं उसके लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है. जी. वी नीड टू सेल, वी हैव टू सेल आवर आइडियाज. हमें हमारा आइडियाज सेल करनी पड़ती है. डिजाइन करना एक बात हो गई, बट सेल करना दूसरी बात हो गई. जी. सो वो जो क्लाइंट अप्रोच रहता है और बहुत सारी चीजें, जब तक हम खुद का चालू करते नहीं, खुद का प्रैक्टिस चालू करते तब तक सीखने को मिलता नहीं. एंड जब हमने प्रैक्टिस हमारी जब चालू किया, देन
वो धीरे धीरे सीखना हमारा स्टार्ट किया। You named a few architects of the city, people who know them, love them, they followed their work. Salankar, yeah, Pashine family. Yeah. You've mentioned Pallavi Ma'am and Ruak sir. What are or what were their best practices जो आप आज भी फॉलो करते हैं? द कंसेप्ट एंड द अप्रोच टुवर्ड्स द डिजाइन। आई मीन क्या होता है, बेसिक चीजें जो बिकता है वो बेचना चाहिए जी। जो क्लाइंट को जो चीज चाहिए वो ट्यूनिंग आर्किटेक्ट का अगर मिल जाए तो वी कैन हैव अ वेरी गुड आर्किटेक्चरल मॉडल बेसिकली। आप वो एक चीज बता रहे हैं, हम एक चीज कर रहे हैं, इट्स गिव एंड टेक सिचुएशन, वो अलग बोल रहे हैं, हम अलग डिजाइन कर रहे हैं, तो वो चीज में चीजें बिगड़ना चालू हो जाती है जी। बट ये चीजें उनसे काफी सीखने मिली, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, क्लाइंट के लिए एटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ द बॉक्स डिजाइन थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स। आई मीन ट्रेडिशनल चीजें होती रहती है। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा किया था, क्या था वो, और कितने पैसे मिले थे? वो यहाँ पे बताना भी चीज है। फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज अ स्मॉल ऑफिस, नागपुर में किया था हमने। इट वॉज 1,000 स्क्वायर फुट ऑफिस, बजट वॉज 5 lakhs ओनली एट दैट टाइम, 2009-10 जी। उसके पैसे कुछ मुझे मिले थे 20-25 हजार रुपए, चार्ज किए थे 40,000 रुपए, मिले थे 25,000 रुपए। ओके। बट दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, इट वाज अ बिग थिंग। क्या होता है जो एनकरेजमेंट मिलता है जी, 1 रुपया मिलने से भी जी, वो एनकरेजमेंट ही काफी रहता है सामने बढ़ने के लिए। सर उसके बाद कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया आपने? उसके बाद में फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए अभी तक हमारे। वी आर स्पेशली इनटू रेजिडेंशियल टाउनशिप्स, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, hospitalities, interiors, commercial interiors. We do infra development also. We do industrial designs also. Warehousing, factories, ये चीजें भी हम काफी सारे करते हैं। Small interiors, I mean, the scale is varied. I mean, from small scale to big scale, every type of project is there. We do it. So when you started your company, yeah, was it that time when you were married? Were you married when you started? After 2 years only. Okay. I married. तो सर फिर बॉस क्यों बदला सर? आपकी कंपनी का बॉस क्यों बदला? आपका बॉस तो बदल गया, ये मान गए सर कि आपके डिसीजंस किसी और ने लेना शुरू किया। आपकी कंपनी के डिसीजंस आपने वो बागडोर किसी और के हाथ में आपने क्यों दिया? आई वुड रियली लाइक टू नो। आई मीन क्या होता है कि ऑफिस में जो एक पीसफुल जो एटमोसफेयर लगता है जी, कुछ पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ते हैं जी, उसके लिए हमें ना एक फॉर्म हेड लगता है जी। तो उसके लिए हमें कुछ एडिशनल लोगों की हेल्प मिली जी, एंड उसके हिसाब से फिर हमने डिसीजंस काफी सारे अलग अलग लिए। सो गेटिंग मैरिड टू एन एडवोकेट वाज अ वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन सर? इट वाज कैलकुलेटेड सिंस 9th standard. ओह माय गॉड। Yeah. Okay. We were childhood friends, and that day decided only कि we'll move parallelly. Just like railway lines. We'll converge. So ma'am का नाम, if you can just. She is Shraddha. She is from Advocate. She is advocate Shraddha. She is from Pune, and she is a lawyer. And she is my friend, my colleague, everything. And she has a great part in developing myself, my company. So as far as policy making decisions or administration, tough decisions जिनको लेने की बात आती है, तो there is that the space where she takes a decision, or has she ever come up with ideas with interiors also and with time? I mean not at all interiors, because she knows कि जो मेरा expertise जो है वो मेरा expertise है, जो उसका expertise है वो उसका expertise है। So मैं भी उसे पूछता नहीं हूँ कि यार श्रद्धा यहाँ पे कौन सा कलर यूज करूँ। I mean everything is good for her. Absolutely. Whatever I do is good for her. But ये चीज अप्रोच कैसे करना है क्लाइंट के लिए, हाउ कैन बी द स्पेयर हेडिंग फॉर द कंपनी, सामने की फ्यूचर क्या रहने वाली है आपकी कंपनी, ये चीजें मैं उससे हमेशा डिस्कस करता हूँ। एंड शी हैज अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले इन दिस। So what's the exclusive part of architect Aditya Indurkar's work? What's your USP? I won't say the USP, but my thinking is, I mean क्या होता है हर आर्किटेक्ट का खुद का एक आइडियोलॉजी रहती है कि आई विल वर्क दिस वे ओनली, आई वर्क दैट वे ओनली। क्या होता है आइडियोलॉजीज में क्लाइंट सफर कभी कभी होता है। आई मीन वो थोपी जाती है चीजें उस पर। आई डोंट डू इट एज फार एज आई एम कंसर्न, आई डोंट डू इट, क्योंकि हर क्लाइंट का हर घर, हर बेडरूम, हर कोना डिफरेंट रहता है, हर एक का अप्रोच अलग है उसकी लाइफ के लिए। तो वो आदमी को उसको क्या चाहिए इसके हिसाब से हम हमारे डिजाइन मॉडिफाई करते हैं। आई मीन आई थिंक दैट इज व्हाट आई डू।
और मेरे ख्याल से ये डिफरेंट चीजें हम हमारे ऑफिस में करते हैं. Sir, God has been very kind to you when it comes to success. Your work has been appreciated, and the escalation of your career is great. But then it also brings those times जहाँ पर प्रोजेक्ट्स में जहाँ क्लाइंट की बहुत ज़्यादा अपेक्षा उम्मीदें आप पर निर्भर रहती हैं. Do you get stress at home? Stress is a part of this. Every profession, I mean. एक रास्ता में खड्डे खोदने वाला लेबर को भी स्ट्रेस है, अंबानी जी को भी स्ट्रेस है, एवरीवन हैज स्ट्रेस. बट इट्स अ पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन बेसिकली. और उसके साथ में चलना. What do you enjoy the most being an architect? द क्रिएटिविटी एंड द लिबर्टी. आई मीन जो विश्वास हमें रखा जाता है हम पे क्लाइंट का. आई मीन ही इज बेसिकली ही इज डूइंग वो खुद का घर बना रहा है जी. और खुद का घर बिना देखे हम पे विश्वास डाले वो हमारे पास आते हैं एंड रिलाइज ऑन अस. बेसिकली वो जो क्रिएटिव लिबर्टी हम एंजॉय करते हैं, दैट इज अ वेरी वेरी एंजॉयिंग थिंग. Post COVID, it's been observed that the paying capacity of people when it comes to home has increased. Yeah. People have started investing more at home and luxury. Yeah. So what's your thought on that? आई थिंक लोगों की लग्जरीज डेफिनेटली बढ़ी है एंड पीपल आर मोर कंसर्न टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट नाउ. आई मीन अभी तक जो स्पेंडिंग हो रहा था, आई मीन हेवा स्पेंडिंग, जी. बट अभी जो लोगों का ये हुआ है कि नहीं, वी नीड टू स्पेंड ऑन क्वालिटी वर्क नाउ. तो वो चीजें काफी बढ़ी है, एनहांस हुई है नागपुर में करंटली. इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड फॉर द सिटी. So with time, it's been observed that people have stopped going to places like China and Delhi for furniture, artifacts, chandeliers, a lot of things. So what's your thought? Should these kind of travel shopping should be there, or now you've started getting things here, back here in Nagpur? In Nagpur, it is quite difficult actually. Still, it is very difficult. We often travel to Delhi, we often travel to China, to Mumbai, to Bangalore, to Hyderabad. I mean, क्या होता है कि एक छोटे शोरूम से खरीदना and purchasing from big factories is a different thing. So ultimately, when client goes to China, he knows कि इसके अलावा और चीज यहाँ पे, इसके अलावा दुनिया में और भी मिलने नहीं वाली. This is the factory itself. तो वहां से परचेस करना एंड कन्विंसिंग हिम डायरेक्टली दैट दिस इज योर सोफा एंड दिस इज योर कबर्ड, यू आर गोइंग टू परचेस दिस वन. ही फील्स इट, ही सीज इट, ही बिलीव्स इन इट कि दिस इज द क्वालिटी. सो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू कन्विंस हिम टू परचेस द आइटम डायरेक्टली. Sir, a very quick, review from you on the, topics I throw on you, and I just need light over it. So, what's your thought on solar energy? I mean, solar energy is a great thing. फ्यूचर बोल नहीं सकते, दिस इज अ प्रेजेंट थिंग नाउ. बट ये चीजें और एलाबोरेट होना बहुत जरूरी है. आई मीन ओनली यूजिंग सोलर डायरेक्टली टू सप्लाइंग इट टू ग्रिड, इसके स्टोरेज सिस्टम्स एनहांस करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट्स योर थॉट ऑन वास्तु? वास्तु एज फार एज कंसर्न क्लाइमेटिकली थॉटफुल, वेरी थॉटफुल है. क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स अगर फॉलो करते हो, इवन आई डू इट, बट sticking to the climatic aspects only. Otherwise, ये रंग वो चीजें यहाँ पे लगा हुआ, I don't believe in this. I mean, there are some, this is a belief actually. I cannot touch the beliefs. But as far as the Vastu is concerned, climatic aspects are very important that has to be followed. So, what people talk about your work when it comes to interiors is themes, palettes, patterns, colors, also artifacts. Yeah. Stores like Elementary, in Nagpur, is it a pleasure for people of Nagpur? I mean, we are always looking for such kind of stores here. Always looking for, and quality stores where client is feeling very privileged. I mean, they were lacking, and now these people are spearheading in the industries now. It's very helpful. So furnishing stores where they have a variety. Now the variety is a lot more. Than the store size. Yeah. So what's your suggestion to people who are into furnishing business? I mean, no one can accommodate all the varieties. In Wonder Woman, it is almost impossible. There is so much of variety. But when you interact with many architects, interior designers, you get the ideas what people are looking forward, or the designers are looking forward. In that way, we can. I mean, the storekeepers can have their stocks. So in a era where Instagram pictures and a so-called app called Pinterest is taking the breaths of interior designers. What's your thought over it? थोड़ी
मेहनत बढ़ जाती है हमारी. ठीक है. To convince them, to divert them away from the Pinterest. That's a diversion thing basically. I mean, जैसे डॉक्टर्स चिढ़ जाते हैं गूगल से. गूगल पे कुछ भी देखो तो भैया पेट दुखने लगा तो कैंसर होता है, सिर दुखने लगा तो ब्रेन हैमरेज होता है. Just like this, when people come up with the Pinterest palette. आजकल वो ट्रेंड है. But that is a different thing actually. क्या होता है कि हर कोई चाहता है to convey the ideas, and Pinterest is the best thing. So in 1990s there was this book, a magazine which was very popular, and there was one, probably one piece of education which these interior designers got was from a magazine called Inside Outside. Yeah, very expensive, but then when people used to see those kind of homes, the interiors, it used to actually melt hearts. Then Pinterest came, and now Pinterest has taken the place. Sir, how do you upgrade yourself? I mean, in this era of social media is the best thing. I mean, my company is on platforms like Pinterest, YouTube, Facebook, everything. And we generally depend, 90% we depend upon these kind of digital medias. I mean, print media is becoming obsolete now. No one is in the mood to have a magazine. Absolutely. And so that's why with the time, with the technology. With the technology, you need to move. Definitely. Sir, one project you have done which a lot of people don't know that it's your project, a commercial one probably, or one of your project which is very close to your heart. I did a bungalow just next to Diksha Bhumi. It's an old bungalow. It was one of my very early projects. Yeah, the name is Puneet. Yeah. So it was very early project. I did the architecture also, the interiors also, landscaping also. The client was so liberal, and he's one of the best friends of mine now, and one of our elite clients of the company. So that project is very close to me. So when it comes to clients, with time there has been a lot of transformation, where the decision making is more into the younger, lot of the family. Sir, how easy or how difficult is to convince them? I mean, that is very easy to convince them. एंड होता क्या है कि कुछ चीजें यंग लोगों के साथ में डिस्कस करनी पड़ती है, कुछ चीजें सीनियर लोगों के हाथ में रहती है, उनसे डिस्कस करनी पड़ती है. आई थिंक मोर ऑफ मनी इज इन विद सीनियर्स. जी. तो कुछ चीजें उनसे डिस्कस करते हैं, कुछ चीजें हम लोगों से डिस्कस करते हैं. इन दैट वे हमारे लिए काफी इजी हो गई चीजें. So my last two questions. One is, sir, what's your peace of mind for all these young aspirants who are, dreaming to become, a popular architect like you or interior designer like you? I mean, architecture में the only one thing is the creative mind. I mean, क्या होता है कमर्शियली बढ़ने के बाद में there are some restrictions कि आपको फास्ट पेस करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है. क्रिएटिविटी उसमें थोड़ी सी पीछे हट जाती है. बट माई एडवाइस इज टू स्टिक टू दैट क्रिएटिविटी. क्रिएटिव इज द अल्टीमेट सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इन आर्किटेक्चर फैकल्टी, आई थिंक. सर, अगर डिजाइनर्स की एक सुनहरी किताब लिखी गई, उस किताब के एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, आर्किटेक्ट आदित्य इंदुरकर, उसके नीचे कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी लाइन, कौन सी ऐसी बात, कौन सी ऐसी मन की बात आपकी लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? That is very difficult. Or probably a quote of your life. I mean, give practical solutions. सिटी के लिए काम करना है. सिटी जानी जाती है उनके डिजाइनर्स से. कोई भी सिटी में जाते हो, बिल्डिंग देखते हो, वो बिल्डिंग्स डिफाइन करती है सिटी का एक ऑरा डिजाइन डिफाइन करती है. When you go to Jaipur, it's a pink city. When you go to Delhi, it's an old city. When you go to Mumbai, it's a high skyscraper city. Every architect का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है नागपुर में. नागपुर को जितना गवर्नमेंट कर रही है डेवलप, उतना आर्किटेक्ट्स को डेवलप होना वेरी जरूरी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो माई कोट वुड बी लाइक, बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल डिजाइनर. Sir, I think you've very well justified this what you're holding right now, this trophy, because this is for people who are taking Nagpur to that next level of appreciation when it comes to when people come down to Nagpur and they see that these good work have been done by people from Nagpur. So with this thought, I'm sure the young lot will get inspired more. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Super.
आर्किटेक्ट आदित्य इंदुरकर सर से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक बड़ी अच्छी लाइन है, नवजोत सिंह सिद्धू कई बार कहते हैं और मैं भी कई बार कहता हूं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, आर्किटेक्ट आदित्य इंदुरकर की कहता हूं, अपने काम के प्रति, अपने शहर के प्रति समर्पण का भाव इंसान को भगवान बना देता है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात, तब तक शहर को खूबसूरत बनाएं और जिंदा रहें। जय हिंद।